Hmm. Assalamu Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and I hope I'm audible to you all. I warmly welcome you all to our last session in this workshop. Khan- Khansa, speak a bit louder. Yes, Your am voice I is not very low. audible? Is it clear now? Assalamu alaikum. Am I audible now? Perfect. It's perfect. All right, thank you so much. So I warmly welcome you all on behalf of Robotics in our last session of this workshop. So in the final session, we will delve into the area landscape specific to Pakistan and also examine international perspectives. We will discuss the legal framework, regulatory mechanism, recent developments in India, and a comparison between both within Pakistan and on an international scale. So, this session will provide valuable insights into the practical aspects of area in different contexts. And this session will be delivered by Mr. Hassan, who's an engineer and also an advocate and arbitrator at 92 lakhs. He is internationally accredited mediator by CMC, SIMI, and IMI, and nationally accredited by the Ministry of Law and Justice and Islamabad High Court. Furthermore, he is on the panel of Maldives International Arbitration Center, Pakhtunkhwa Highways Authority, MIC ADR, and ICADR. He is also a member of PAC, Charter Institute of Arbitration, Prime Dispute, Society of Construction Law, and AIADR. So let's hear more from Mr. Hassan, and I warmly welcome you, Mr. Hassan. We are really grateful for your time and for your presence here. So you may start the session. You have the floor. Assalamu alaikum. Am I audible to everyone? Yes, sir, you are perfectly audible. Thank you. Well, my name is Hasnan, Muhammad Hasnan Khan, and Khansa has given my introduction and everything. So the topic today I'm going to represent would be the international and domestic arbitration in Pakistan, its enforceability, its legal frameworks, the recent cases, the developments in Pakistan regarding the ADRs. Actually, I have done my master's in civil engineering and my bachelor's in laws, followed by a few other degrees. And I'm currently working as the managing partner and arbitrator at 92 Lakes. And the rest of the introduction has been introduced by Khansa. Thank you so very much. So before starting what's arbitration, I hope you guys have two of the insightful sessions yesterday and day before yesterday regarding ADRs. So what is arbitration and how it is related to legal system? So actually there are two things specifically nowadays, that is the litigation and the other side out of court settlement. So in the litigation, you go to the court, you present your plea, and then you seek the judgment from the court. But on other side, in the ADRs, there are different steps to resolve a dispute. The basic and the major steps are: first, we negotiate. After the negotiation, we go towards mediate. And mediation is a very important step of ADRs. And nowadays it's developing a lot in Pakistan, along with that in the rest of the world. And there are different mediation centers now. And the mediation centers are even, okay, so the mediation centers are actually facilitating the parties to resolve their dispute by their consent. After mediation, the rest of the ADRs are not binding on parties. But when we are talking about arbitration, that is the topic of today's lecture. When we are talking about arbitration, arbitration is the method of ADRs or the type of ADR that is binding on the party.
And that's why arbitration is very much highlighted. It's a kind of a other separate profession that people are practicing. So in today's lecture, we will talk about the background of ADRs and the background of arbitration in Pakistan. Then we will move towards and move forward with the legal framework for domestic arbitrations in Pakistan. Then the international arbitrations in Pakistan and their enforceability. And then we will talk about the advantages of domestic and international arbitrations in Pakistan and the challenges to it. And also at the end of the lecture, we will compare both, that what are the comparisons between the international and domestic arbitrations in Pakistan. And then I think there is a session of questions. So I'm always here to answer. Can I go to the next slide, please? So starting with the background. Hassan, are we supposed to speak bilingual or we are just supposed to speak in English? So it would be good if you go bilingual because we are mostly having audience of Pakistan. Okay, thank you, Hassan. So देखिए, हम लोग जब इंटरनेशनली भी जाते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, तो हम लोग एक बहुत बड़ा क्रेडिट अपने पास रखते हैं कि जो एडीआरस का ओरिजिन है और जो एडीआर स्टार्ट होती है समहाउ, वो हम लोगों से ही स्टार्ट होती है. हम लोगों ने सिस्टम था, हमारा बहुत पहले बात है, पुरानी बात है, जिरगा सिस्टम और पंचायत सिस्टम, वहां से ही आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट स्टार्ट हुई कि अगर आप कोर्ट्स में नहीं जाते तो आप उनके पास जाते, और लेकिन वो जो था अनडॉक्यूमेंटेड था. आप उनके पास जब जाते हैं और उनसे आप कोई भी प्रेयर करते हैं तो वो सोशली बाइंडिंग रखता है. सोशली बाइंडिंग हम पे होता है, हम सोसाइटी के प्रेशर की वजह से उसको बाइंडिंग समझते हैं, वो लीगली नहीं होता. सो उसी सिस्टम में अडॉप्ट होने के लिए वी टेक ट्रेस बैक द आर्बिट्रेशन इन द एडीआर सिस्टम बैक टू द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा. जब उन्होंने ये सिस्टम देखा कि ये तो अपने मसले खुद ही हल कर रहे हैं, तो उन्होंने इस फॉर्मेट को, इस पूरे सिस्टम ऑफ जुडिशियल सिस्टम को एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म देना चाहा. और वो सबसे पहले जो स्टार्ट हो गया था वो था इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1899. इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद पाकिस्तान उस आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1899 को रिफाइन करने लगा ताकि उसको अडॉप्ट किया जा सके. And the current legislation that is ongoing in Pakistan, on which all the arbitrations are regulated or which govern all the arbitration in Pakistan, is the Arbitration Act of 1940, which is based on the Indian Arbitration Act of 1899. लेकिन ये सब कुछ जब हम इसको करते हैं, तो हम जब इसको कंपेयर करते हैं इस एक्ट को या इस ओवरऑल सिस्टम को back to the old system of jirga and panchayat, तो वो उससे थोड़ा डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल एडीआर में हमारे पास मीडिएशन आता है. इन मीडिएशन जो है तो उसमें पार्टी की मर्जी से सिर्फ द आर्बिट्रेटर्स आर देयर और द मीडिएटर्स आर देयर जस्ट टू फैसिलिटेट द पार्टीज, बट द डिसीजन ऑफ द मीडिएशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन देम unless and until they agree, they get into an agreement for that. But the jirga system in the panchayat system was different. So we cannot call it mediation. The same goes for arbitration. In the arbitration, it was supposed to be heard by the parties and there were no judgment and there were no kind of award, written award. So when we get into written awards, then that is the difference in the beauty of arbitration. So it was a little bit about the historical background that we have this privilege to say that we are actually the origin of arbitration, or basically the ADRs. It started from the subcontinent. It started back from the cultural and traditional judicial system of this whole region. Can I go to the next slide, please? Then moving forward, and this is something that needs in the student age or in the fresh graduate state, that we need to understand about the legal framework of domestic arbitration in Pakistan, that how arbitration take place, in which framework it works, and what is its scope, what are its applications,
what actually is an arbitration agreement, how do you appoint arbitrators, how the conduct of proceedings take place, the court's intervention, how court can intervene, is the court supposed to intervene or not, power of the arbitrators, enforceability of the awards, and how can we set aside the awards and what are the challenges to it. And then we will move towards, after the framework, towards the domestic arbitration procedure. What is the procedure of domestic arbitration? For example, when you enter into arbitration, how you carry out the procedure throughout. And then we will talk about the governing legislation. What are the laws basically that governs the arbitration, the domestic arbitration in this part of Pakistan, and then we'll move towards the international arbitration. So talking about the scope and application. देखिए 1940 का जो arbitration act है वो पाकिस्तान के तमाम arbitration proceeding को गवर्न करता है, except few of the certain sectors जो हम इसके अंडर नहीं लाते, वो स्पेशली आते हैं. For example, the maritime or the international commercial arbitration, क्योंकि वो different लॉज के अंडर डिफरेंट लॉज से उन्हें गवर्न करती है, डिफरेंट रेगुलेशंस है उसके लिए, स्पेशल लॉज है, स्पेशल कोर्ट्स इवन होते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स होते हैं, कमर्शियल कोर्ट्स होते हैं, देयर इज अ कोर्ट इंटरनेशनली आईसीसी के नाम से. तो वो सारी चीजें जो होती हैं वो गवर्न होती हैं. लेकिन पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक सम ऑफ द फ्यू सेक्टर्स के अलावा जितने भी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पाकिस्तान में होती है वो ओवरऑल पाकिस्तान, उनका स्कोप जो हो, जुरिस्डिक्शन ओवरऑल पाकिस्तान में जहां पे भी हो, इन इट्स एप्लीकेशन they are governed by the Arbitration Act of 1940. Then moving towards what is an arbitration agreement. Arbitration agreement एक ऐसी agreement होती है जिससे दो parties बाइंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं कि वो प्रोसेस को फॉलो करेंगे और वो एग्री हो जाते हैं कि हम आखिर में जो भी आएगा हम उससे अपनी कंसेंट से उसको मानते हैं और हम हेयरिंग्स करेंगे और हमारी अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स और वो सब कुछ एक आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर उसको लीगलाइज करने के लिए होती है. सो बेसिकली द एक्ट रिकॉग्नाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ पार्टी एटोनॉमी. हम जब पार्टी एटोनॉमी पे आते हैं तो वो जो पार्टी एटोनॉमी होती है वो एक्ट से रिकॉग्नाइज करता है. फिर उसके बाद हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स को एम्फसाइज करते हैं. सो द पार्टीज एटोनॉमी एम्फसाइजिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुड बी बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट्स ऑफ द पार्टी. ये दो चीजें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दोनों पार्टीज उस पे एग्री होंगे और उस एग्री होने के बाद ही वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में एंटर होंगे. तो द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन अ फॉर्म ऑफ सेपरेट एग्रीमेंट और कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जितने भी आजकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यूजुअली, I specifically work in the construction industry, the construction arbitration and dispute resolution of construction industry. तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत बिलियन डॉलर्स की बात होती है उनमें. तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उनमें एक क्लॉज ऐड करते हैं और वो क्लॉज हम उसको कहते हैं द आर्बिट्रेशन क्लॉज. बाय दैट क्लॉज द पार्टीज वांट कि जब भी डिस्प्यूट आएगा तो हम जब डिस्प्यूट आएगा तो हम एंटर होंगे आर्बिट्रेशन में. बट कॉन्ट्रैक्ट उसको और भी फ्लेक्सिबल करता है कि हम डायरेक्ट आर्बिट्रेशन में भी एंटर नहीं होंगे. हम पहले एक डिस्प्यूट बोर्ड बनाएंगे. डिस्प्यूट बोर्ड का डिसीजन अगर पार्टीज एग्री हो तो ठीक है, हम एमिकेबल सेटलमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो डिस्प्यूट बोर्ड का डिसीजन अगर एग्री हो तो ठीक है, रिजॉल्व हो जाएगा डिस्प्यूट. लेकिन अगर एग्री नहीं होते देन कम्स द आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. सो बाय दैट आई मीन कि हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है उसके लीगल फ्रेमवर्क में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है तो वो सेपरेट एग्रीमेंट भी हो सकता है और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. द थर्ड पॉइंट इज कि हम आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कैसे करते हैं. सो इन डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द पार्टीज. द एक्ट जो आर्बिट्रेशन एक्ट है वो एक्ट अलाउ करता है पार्टीज को टू अपॉइंट आर्बिट्रेटर्स ऑफ देयर चॉइस. But if the parties fail to agree on the appointment, the Act provides a mechanism for the appointment of arbitrators by the court. आप पहले parties खुद अपॉइंट करते हैं. अब अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स कितनी किस्म की हो सकती हैं? सो एक्चुअली आर्बिट्रेशन में आप दो तरह से, यूजुअली दो तरह से ही आप आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करते हैं. द फर्स्ट वन इज आइदर आप सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं.
दोनों पार्टीज एक आर्बिट्रेटर को नॉमिनेट करती है और उसी आर्बिट्रेटर को सोल आर्बिट्रेटर कह के उसी को अथॉरिटी देती है कि वो आर्बिट्रेटर जो है वो प्रोसीडिंग्स करे और वो आखिर में अवार्ड दे, हमें हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व करे। इफ नॉट दैट, देन होता यह है कि each of the party, if there are two parties or there are multiple parties, each of the party वो अपने अपने आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करती है एंड वो आर्बिट्रेटर्स अपने लिए अगर उनके दरमियान पॉइंट ऑफ कंटेंशन मेंटेन रहे तो अपने लिए अंपायर डिसाइड करती है कि अंपायर हमारा कौन होगा। ठीक है, फिर वो भी आर्बिट्रेशन टू आर्बिट्रेशन डिफर होती है कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ आर्बिट्रेशन में तो गवर्नमेंट पार्टी जो आर्बिट्रेटर सेलेक्ट करती है तो यूजुअली ही मस्ट बी समवन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ द ग्रेड 19 और अबव, जो बेसिक पे स्केल होता है 19 और अबव, लेकिन वो डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं। लेकिन द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स एक्ट के मुताबिक ऐसे ही होती है। फिर हम जाते हैं द कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। So the Act, the 1940 Act, provides guideline on various procedural aspects of arbitration, including the manner in which proceedings should be conducted, the submission of statement of claim and defense, the examination of witness and the submission of evidence. और उसके बाद उसको हम ले जाते हैं अवार्ड में। प्रोसीडिंग्स जो है वो जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड होगी उसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ द प्रोसीडिंग्स गोज ऑन और हम प्रोसीड कैसे करते हैं, हम उसको चलाते कैसे हैं आर्बिट्रेशन को, और वो एंड कैसे होता है, अवार्ड कैसे होता है, वो सब द बेसिक्स ऑफ इट। उसके बाद हम आते हैं द पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर पे कि व्हाट आर बेसिकली द पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर। सो द आर्बिट्रेटर्स हैव द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस on procedural matters and to determine the substantive issues in dispute. I hope you are understanding the point कि to make decision on procedural matters and to determine the substantive issues in dispute. They can issue interim orders, summon witnesses, and require the production of documents as it happens in the court. कोर्ट्स में भी ऐसे ही होते हैं, वो प्रोसीजर को भी देखते हैं, वो इश्यूज सब्सटेंटिव इश्यूज को भी देखते हैं, वो इंटर्म्स ऑर्डर जारी कर सकते हैं, समन विटनेसेस को बुला सकते हैं और कह सकते हैं कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। इट हैपेंस इन द सेम मैनर, दोनों पार्टीज को बुलाते हैं और जो एसोसिएटेड पार्टीज होती हैं आप उनको बुला सकते हैं, आप उनकी हेयरिंग्स करवा सकते हैं एंड ये सब जो होती हैं ये आर्बिट्रेशन, अगर आर्बिट्रेटर सोल है तो वो अकेले करता है, अगर सोल नहीं है तो आर्बिट्रेटर्स जो होते हैं डिस्प्यूट के वो ये ओवरऑल अथॉरिटी रखते हैं कि वो बुला सके। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोर्ट इंटरवेंशन। सो द एक्ट अलाउज फॉर लिमिटेड कोर्ट इंटरवेंशन इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। देखिए खूबसूरती आर्बिट्रेशन की ये है कि आप कोर्ट के बर्डन को कम करते हैं, आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं और जो उसके एडवांटेजेस है वो हम आखिर में बात करते हैं क्योंकि वो आप लोगों को आई होप आप लोगों को और 2 दिन के लेक्चर्स में बताई भी गई होंगी, लेकिन हम उस पर बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या हैं और एडवांटेजेस क्या हैं। बट कोर्ट की इंटरवेंशन को कम करती है क्योंकि जस्टिस इज व्हेन दोनों पार्टीज ही राजी होती है। जब दोनों पार्टीज ही एक बात पे राजी है तो द डिस्प्यूट रिजॉल्व बाय पीसफुल मैनर इन लेस टाइम, लेस फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट, सब कुछ उसको मिनिमाइज करके बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। सो इसलिए द एक्ट अलाउज फॉर लिमिटेड कोर्ट इंटरवेंशन इन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। द कोर्ट कैन इंटरवीन इन मैटर्स सच एज द अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ आर्बिट्रेटर। एक्ट में ये क्लियर लिखा है कि अपॉइंटमेंट और रिमूवल में कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिसडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल and the sitting aside and enforcement of arbitral awards. ये पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन बाहर भी होता है कि जब आप अवार्ड डिसाइड भी कर लें उसके बाद भी आप कोर्ट में जाके उसको रूल ऑफ कोर्ट कहते हैं, हम उसको रूल ऑफ कोर्ट करते हैं और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन ऑर्डर लेते हैं, which is against the concept of arbitration, लेकिन that is somehow the challenge and drawback in our country कि हम कोर्ट इंटरवेंशन लाते हैं, उसमें एनफोर्सिबिलिटी हमारी कोर्ट से ही होती है आर्बिट्रल अवार्ड्स की। उसके बाद हम आते हैं एनफोर्समेंट ऑफ अवार्ड। हम ये जितनी बातें अभी कर रहे हैं ये डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की हद तक है, अभी इंटरनेशनल पे हम बाद में आते हैं, बाद में आखिर में कंपैरिजन करते हैं। तो द चैलेंज एंड सिटिंग असाइड ऑफ अवार्ड, जब हम चैलेंज और सिटिंग असाइड ऑफ अवार्ड की बात करते हैं तो द एक्ट 1940 एक्ट अलाउज पार्टी to challenge and seek the setting aside of arbitral award in a specific circumstances.
for example, or such as when there is a defect in the arbitration agreement, the tribunal has exceeded its jurisdiction, or the award is contrary to public policy. I hope I'm clear on that कि the पहला कुछ circumstances ऐसे हैं जो हम कोर्ट के पास जाते हैं अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए और या अवार्ड को चैलेंज करने के लिए। उनमें से जो फ्यू है वो ये है कि जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो स्टार्ट में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आप बताते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं फॉर बोथ द पार्टीज, अगर उसमें कोई डिफेक्ट हो या अगर ट्रिब्यूनल जो है वो अपनी जुरिस्डिक्शन से एक्सीड कर दें, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के पास ले जाते हैं और वो ट्रिब्यूनल उस जुरिस्डिक्शन से हट के किसी और डिस्प्यूट को उसमें एंटर करके उसके डिसीजन की तरफ जाती है या अपनी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को छोड़ के आगे जाती है, तो वहां पे कोर्ट उसको आप कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं और कोर्ट से ये भी सीख कर सकते हैं कि उसको सेट असाइड करें। और अगर अवार्ड जो है वो पब्लिक पॉलिसी, ये एक बहुत जेनेरिक टर्म है, पब्लिक पॉलिसी जो पब्लिक की वेलफेयर के लिए होती है, उसके कॉन्ट्ररी हो, उसके अगेंस्ट हो। आई होप ये जो फ्रेमवर्क है ये सबके समझ में, बिकॉज आई टीच ऑल्सो इन लॉ कॉलेजेस, so I hope I'm teaching as a teacher, not as a delivery of a seminar or symposium, but as a teacher, and I hope I'm making sense to you people. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, the domestic arbitration procedure. So can I go to the next slide please? Yes, procedure. हम जब प्रोसीजर पे आते हैं तो कुछ चीजें जो प्रोसीजर में हम पहले बात कर चुके हैं उसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस तरह होता है, उसमें क्या क्या होता है, दोनों पार्टीज की कंसेंट से होता है, उसमें सब कुछ आप मेंशन करते हैं कि इस आर्बिट्रेशन की हम जो है इसमें आर्बिट्रेटर्स कौन कौन होंगे, अगर इसमें अंपायर है तो अंपायर कौन कौन होगा, उनकी पेमेंट्स कैसे कैसे होगी, सब कुछ। इवन पेमेंट्स की बात भी, उनकी जो रिटेनरशिप फी होती है या उनकी डेली फी होती है या उनकी TADA होती है या जो भी अदर एक्सपेंसेस होती हैं या कुछ भी हेयरिंग जिस दिन होती है उसकी फी होती है, तो वो सब कुछ वो भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आप क्लियर हाईलाइट कर देते हैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स यूजुअली ये होता है कि जब आप एग्रीमेंट कर लेते हैं तो आप एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, अगर ये गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन है या कोई भी प्राइवेट है तो वो ये करते हैं कि एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि दीज आर्बिट्रेटर्स आर अपॉइंटेड, और इन आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड के बाद हम प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जब प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी मीटिंग कॉल होती है। उस प्रिलिमिनरी मीटिंग में पार्टीज को भी बुलाया जाता है, आर्बिट्रेटर्स को भी बिठाया जाता है और उनको बताया जाता है कि हाउ द आर्बिट्रेटर्स आर थिंकिंग और सपोज टू टेक द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, उनको कैसे प्रोसीड करना होगा ताकि उनको क्लियर हो कि जनाब चल क्या रहा है, उनकी कंसेंट उसमें हो, वो एग्री हो, उनको पता हो कि हमारा डिस्प्यूट कहाँ कहाँ तक जाता है। ये जो मीटिंग्स होती हैं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग होते हैं जो पार्टी से रिलेटेड होते हैं, जो डिस्प्यूट से रिलेट करते हैं, जो डिस्प्यूट के लिए पार्टीज होती हैं। उसके बाद हम आते हैं जनाब थर्ड वन इज, क्योंकि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी मैंने ऊपर बता दिया और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी बता दिया, तो इसको मैं और डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर पूछ सकते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। सो आई होप जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं इसमें उनको आइडिया होगा व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड व्हाट इज अ डिफेंस, बट अ जनरल ओवरव्यू इज दैट द पार्टी हैव स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। ये होता है कि जब आपका कोई क्लेम होता है तो आप उसको पोर्ट्रे करते हैं, बिल्कुल डिटेल्स में जाके उनकी डिस्प्यूट एस्टेब्लिश करते हैं और आप बताते हैं कि जनाब मेरा ये क्लेम है, इस क्लेम के ये ग्राउंड्स हैं और इस ग्राउंड्स के बेस पे मैं ये प्ली रह रहा हूँ, ये प्रेयर कर रहा हूँ द आर्बिट्रेटर से और आर्बिट्रेटर्स से। और उसके बाद जब वो सबमिट होता है तो उसका डिफेंस अदर पार्टी सबमिट करती है। सो द parties have an opportunity to present their case through written submission. In the arbitration, the claimant submits, जो क्लेम करता है वो सबमिट करता है एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, जिस स्टेटमेंट ऑफ क्लेम में डिटेलिंग ऑफ फैक्ट्स होती हैं, इश्यूज होते हैं और जो रिलीफ सॉट हो रही है वो रिलीफ बताई जाती है कि what is the relief that I sought. And the respondent then submit statement of defense, जो कि यूजुअली आर्गुमेंट्स होते हैं और यूजुअली वो पैरा वाइज रिप्लाई होता है टू द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ द क्लेमेंट, ठीक है। और उसमें अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करते हैं, उनको फैक्चुअल ग्राउंड से, उनको लीगल ग्राउंड से
अपने आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करके सबमिट करते हैं टू द आर्बिट्रेटर्स। फिर उसके बाद जब ये सबमिशन होती है, इस तरह के रिप्लाईज आते हैं, फिर रिजॉइंडर आता है, फिर रिप्लाई आती है, तो वो गोज इन बैक। उसके बाद कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग की जब हम बात करते हैं तो इट प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इट अलाउस पार्टी, ये जो एक्ट है ये पार्टीज को अलाउ करता है ऑन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड, इंक्लूडिंग द टाइम एंड प्लेस ऑफ द हियरिंग, the language of proceedings, and the presentation of evidences. In the absence of the agreement, the arbitrator has a discretion. ये एक arbitrator की एक और पावर है, ये उसकी discretion है कि वो ये चीजें डिटरमिन करता है। भाई ये चीजें आई मीन टाइम क्या होगा, प्लेस ऑफ हेयरिंग्स क्या होंगी अगर हम हेयरिंग कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में हम प्रोसीड करेंगे, एविडेंस को किस तरह प्रेजेंट करेंगे, एग्जिबिट्स क्या होंगी, सब कुछ वो पूरा आर्बिट्रेटर की डिस्क्रिप्शन है। अगर एग्रीमेंट में ये बातें पहले तो लिखनी चाहिए, अगर ना हो तो आर्बिट्रेटर हैज द डिस्क्रिप्शन टू डिटरमिन दीज मैटर्स। उसके बाद हम आते हैं एविडेंस एंड विटनेसेस पे। सो द एक्ट अलाउस पार्टी टू प्रेजेंट एविडेंस। मैं जब भी ये बात कर रहा हूँ कि द एक्ट, सो कीप दिस इन माइंड कि जब मैं डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ, सो व्हेन आई से द एक्ट, इट मींस द एक्ट, द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940। द एक्ट अलाउस पार्टी to present evidence to support their respective positions. The arbitrator has the power to summon witness, वो witness को summon कर सकता है, examine witnesses under oath, arbitrator उनको examine कर सकते हैं under oath, and request the production of documents and other evidences. और ये जिस तरह courts में होता है वैसे ही arbitrator की authority है जज के तौर पे कि वो summon witness कर सकता है, उन witnesses को examine कर सकता है, under oath examine कर सकता है, और जो रिक्वेस्ट है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के वो भी कर सकता है, और कोई भी अदर एविडेंस। And the act also, beside that, the act also provides for the admissibility of evidence and the examination of evidence. Arbitrator एक्सपर्ट को हायर कर सकता है सेक्शन 11 के अंडर, या वो किसी को भी एक्सपर्ट को इवेलुएट करवाने के लिए दे सकता है कि ये जो एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस को देख सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस कर सकता है, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। टेक्निकल इशू हो तो ओपिनियन लेने के लिए भी वो एक्सपर्ट को हायर कर सकता है। फिर हम आते हैं इंटर्म्स मेजर्स में। इंटरम मेजर्स जो है तो उसमें पार्टी में सीक, जितनी भी पार्टीज हैं, अगर 2 पार्टीज हैं वेल एंड गुड, नहीं तो मल्टीपल पार्टीज हैं, मल्टीपल पार्टीज, बट द पार्टीज में सीक इंटरम मेजर्स फ्रॉम द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू प्रिजर्व देयर राइट्स और प्रिवेंट हार्म पेंडिंग द फाइनल अवार्ड। और 1940 का एक्ट कहता है कि इट ऑल्सो, वो एक्ट एम्पावर करता है आर्बिट्रेटर्स को grant interim orders, including injunctions or orders for the preservation of assets or evidence. जो assets हैं, evidence हैं, excuse me, give me a second. Sorry, I was just getting a call. Okay, so वो जो ऑर्डर्स और एविडेंस और एसेट्स होती है उसको प्रिजर्व करने के लिए भी ऑर्डर्स एक्ट के मुताबिक आर्बिट्रेटर के पास पावर है कि वो आर्बिट्रेटर उसको ऑर्डर दे सकता है कि प्रिजर्व द एसेट्स और एविडेंसेस। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम आते हैं जो कि हैं अवार्ड्स। अब हम कोर्ट्स में जब लिटिगेशन में जाते हैं तो हम जजमेंट्स लेते हैं कोर्ट से, एंड आर्बिट्रेशन की जजमेंट को हम अवार्ड बोलते हैं। तो वो अवार्ड आफ्टर कंसिडरेशन द सबमिशंस, एविडेंसेस, इन वो जो आर्गुमेंट्स होती हैं, उसका रिजॉइंडर होता है, रिप्लाईज होती हैं, वो सब कंसिडर करके द आर्बिट्रेटर, जो सोल आर्बिट्रेटर होता है, और जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है, वो एक अवार्ड रेंडर करता है। The award is the final decision of the arbitration proceedings and resolves the issues in dispute. The act specifies that the award must be in writing. 1940 का एक्ट कहता है कि जो अवार्ड आप रेंडर करेंगे वो must be in writing, signed by the arbitrators, and include the reason for the decision, unless the parties agree otherwise. आप उसको इन राइटिंग में लाएंगे, आर्बिट्रेटर साइन करेंगे, पार्टीज साइन करेंगी, और ये एग्री करेंगे कि जनाब हम इसको मानते हैं, हम इससे एग्री होते हैं।
unless the parties agree otherwise. अब ये भी होता है कि एक आर्बिट्रेटर, जब मल्टीपल आर्बिट्रेटर्स होते हैं तो एक आर्बिट्रेटर एक अवार्ड लिखता है, दूसरा आर्बिट्रेटर दूसरा अवार्ड लिखता है, एंड ट्राई टू मेक द कंसेंट ऑन अ सिंगल पेज. लेकिन देन अगेन इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड की जब हम बात करते हैं, चैलेंज इन इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड, तो वो अवार्ड अगर एग्री ना हो तो ये, इन माय ओपिनियन, माय हम्बल ओपिनियन, आई बिलीव दिस इज अ ड्रॉबैक इन द आर्बिट्रेशन सिस्टम, कि हम उस अवार्ड को, अवार्ड हो गया तो इट मस्ट बी बाइंडिंग ऑन द पार्टीज. लेकिन हमारा एक अलमिया ये है कि हम उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कोर्ट्स में. एंड देन अगेन ये पूरा प्रोसेस रीट होता है, क्योंकि हम आर्बिट्रेशन, एक रीजन ये भी होती है कि हम कोर्ट प्रोसीडिंग को अवॉइड करना चाहते हैं कि हमारा रिजॉल्व जल्दी हो जाए डिस्प्यूट. लेकिन इस चीज की वजह से, प्रोसेस की वजह से वो दोबारा लिटिगेशन में जाता है, और जिस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं वही चीज दोबारा रिपीट होती है. दैट्स व्हाई इन माय हम्बल ओपिनियन आई बिलीव इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम. बट वो चैलेंज हो सकता है, और एनफोर्स भी, आप उसको एनफोर्स करने के लिए उसको रूल ऑफ कोर्ट बनाते हैं. देन अगेन यू गो टू द कोर्ट, एंड समटाइम्स, usually I say, but sometimes the court intervene, and the court intervene जो कि होना नहीं चाहिए, but intervene करता है और arbitrators अवार्ड को और भी डिले करता है. somehow कहीं जाके वो arbitration जो है वो रूल ऑफ कोर्ट बनती है. रूल ऑफ कोर्ट बनने के बाद उसको एग्जीक्यूशन ऑर्डर देना पड़ता है कोर्ट ने, और वो एग्जीक्यूशन भी जब मिल भी जाए तो जो डिमांड बंदे की होती है, अगर वो फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे है, या मतलब उन्होंने प्ली की है कि हमारे इतने पैसे बनते हैं इस बंदे को या इस पार्टी को, तो वो देने में, वो कंप्लीट करने में काफी टाइम लगता है. दिस इज द ड्रॉबैक इन आवर सिस्टम. बट मूविंग ऑन, can I have the next slide? The governing legislation regarding domestic arbitrations in Pakistan. जब हम पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन में किसी भी किस्म की आर्बिट्रेशन आती है, जो जुरिसडिक्शन पाकिस्तान होता है, उसमें आप कंस्ट्रक्शन को ले लें, फैमिली को ले लें, एनर्जी को ले लें, काफी ज्यादा यूजुअली पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा आर्बिट्रेशन हो रही हैं अभी भी, और जिसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन्वॉल्व भी बहुत हूँ, कंस्ट्रक्शन और एनर्जी डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, और प्रोजेक्ट्स में डिस्प्यूट जरूर अराइज होते हैं बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड the government, or contractors with the subcontractors. Let's not get into details of that, but the laws governing the domestic arbitrations in Pakistan, its list is very much generic. By that I mean it's the provincial laws along with the national laws. So I'll just explain a little bit about it. So सबसे मेन और जो सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करते हैं लॉ की और लेजिस्लेशन की, वो है द आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 1940, जो हम ऊपर पूरा जिक्र कर रहे थे. दिस document, this act of 1940 is the primary legislation governing arbitrations in Pakistan. This act provides the legal framework for both the domestic and the international arbitration, with the focus on domestic arbitration. Act outlines the procedural and substantive rules for arbitration proceedings, including the appointment of arbitrators, the conduct of proceedings in the enforcement of awards, और जो हमने ऊपर जितनी बातें की हैं in the legal framework, arbitration agreement की बात की है, conduct of proceedings की, power of arbitrators की, the court intervention की, enforcement of awards की, challenge and sitting side of awards की, फिर domestic arbitration की proceedings की, वो सारी बातें इस एक्ट के मुताबिक है, वो ये एक्ट ही हमें कहता है. But other than this act, the other relevant legislation that impact arbitration in Pakistan is, first of all, is the Code of Civil Procedure 1908. जो law के students हैं, ये उनकी जो interested students हैं, जो interest लेते हैं law में, वो उनकी favorite book भी होती है, लेकिन somehow ये book बहुत ज़्यादा बंदे को थका देती है. So this procedural law includes provisions related to arbitration, particularly in relation to the court's power to refer parties to arbitration and the enforcement of arbitral awards. Other than that, CPC, the Companies Act of 2017. This act contains provision related to arbitration in the context of corporate disputes. Corporate disputes जो होती हैं, उसके context में Companies Act जो है 2017 में जो है, वो उस related arbitration को narrate करता है और उसको regard रखता है कि such as वो होती क्या क्या disputes usually जो shareholders disputes होती हैं और जो winding up of company और mergers of the company के वक्त आती हैं.
I was not able to attend the lecture of last night, yesterday. Ghulam is a very good friend, but I'm so sorry if Ghulam is online. I couldn't attend the conference because इन्हीं corporate disputes पे कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा symposium हुआ था, and its role, the arbitration, the ADR's role in it. So it was very insightful. I would recommend कि आप लोग जो ADRs में interested हैं या corporate law में interested हैं तो ऐसी conferences को search किया करें, lawwits भी उनको encourage किया करें और बताया करें ताकि सब उसमें participate कर सकें. And the third one is the Specific Relief Act, 1877. So this act includes provision related to the grant of specific performance of contract, which may be relevant in the context of arbitration where the remedy sought is, अब arbitration में तो आप remedy sought करेंगे, तो अगर वो remedy है specific performance की, तो then the Specific Relief Act is relevant legislation that impact arbitration in Pakistan. Other than that, the recent जो developments हुई हैं arbitration में और ADRs में पाकिस्तान में, जो कि पाकिस्तान अब कहीं जाके ये prospect feel होता है इंसान को कि पाकिस्तान का future जो है तो वो ADRs है. And to all the lawyers or to the fresh graduates, I would recommend कि ADRs में अपना input दें क्योंकि this is the future and this is going to give you really bright legal professional development. तो जो recent legislation है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने recent हैं और उसके साथ साथ हर एक province उस पे काम कर रहा है. For example, nationally जो है तो Alternative Dispute Resolution Act of 2017 National Assembly ने पास किया. पंजाब में 2019 में पास हो चुका है Alternate Dispute Resolution Act. सिंध में अमेंडमेंट हुई है और उसको कहते हैं सिंध एक्ट नंबर 4 2019 में आर्बिट्रेशन के लिए पास हुआ है. पुख्तनख्वा अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 2020 में पास हुई है. बलूचिस्तान अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बिल 2022 में हुआ है. तो ये सारी डेवलपमेंट टाइम के साथ साथ पाकिस्तान में हो रही हैं और ये बहुत बड़ा एक बहुत ही एक ब्राइट साइड ऑफ लेजिस्लेशन है कि हम जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ जुडिशरी में है उसमें एंटर हो रहे हैं कि हम कोर्ट के बर्डन को कम करने के लिए सबसे बड़ा हमारे पास टूल ही ADRs हैं और उसमें आर्बिट्रेशन बहुत बड़ा टूल. लेकिन अगर हम उसको कोर्ट के इंटरवेंशन को कम कर दें, ठीक है. इसके अलावा और प्रोग्रेस जो लोकली और डोमेस्टिकली हो रहा है तो वो तो इसमें अभी मेंशन नहीं है इस प्रेजेंटेशन में, बट आप नोट कर सकते हैं कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ DRCs इन KP. तो DRCs जो हैं तो DRCs जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स, वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है. इन लोकली हर एक डिस्प्यूट को डेली वहां पे डिस्प्यूट को सुना जाता है. ये DRCs अभी हैं जो IG पुलिस होता है KP का, उसके अंडर होती है. तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये DRCs बहुत ज्यादा काम कर रही हैं, लोकल डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रही हैं. यूजुअली जो प्रॉपर्टी और लैंड के इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करने में बड़ी हेल्प कर रही है. हम ADR की डेवलपमेंट की जब सेंटर्स की बात करते हैं, ADR सेंटर्स डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में पहले सीका ही एक था सेंटर फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इन कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन को देख रहा था. अब डेवलपमेंट बढ़ने साथ ही और भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स इन लाइन आ गए हैं और बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स का ब्रांच खुल गया. उसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है. पंजाब ये सारे ADRs में तो वो मीडिएशंस को इनकरेज कर रहे हैं. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगल एड सोसाइटी के हेल्प से 50 मीडिएटर्स को ट्रेन किया. उनमें से 40 और 30 आई गेस मिला के कुछ आर्बिट्रेटर सर्टिफाई हो गए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिकॉग्नाइज करता है, सर्टिफाई करता है. अब ये वो UK वाले कॉन्सेप्ट की साइड जा रहा है कि आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेते हैं. आप किसी भी डिस्प्यूट को कोर्ट में लाने से पहले आप उसको रेफर करेंगे कि जनाब आप कोर्ट में आने से पहले ADRs को रेफर करें. और ADRs को रेफर आप करेंगे तो आपको अगर एक सूटेबल बंदा चाहिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास एक लिस्ट है, आप वो लिस्ट देख सकते हैं, नेट पे भी ऑफिशियल गेजेट में भी आई हुई है. आप उससे अपने लिए मीडिएटर चूज करें. नहीं तो आप कोर्ट में जाए, कोर्ट आपको आर्बिट्रेटर भी अपॉइंट कर देगा और मीडिएशन भी अपॉइंट कर देगा. और ईवर ADR सेंटर्स बने हुए हैं अब, तो वो ADR सेंटर्स आपके लिए सब कुछ हैंडल कर देंगे आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए. Other than that, ADR initiative is there from Lahore, ADR Institute from Islamabad is there. Pakistan Mediators Association काफी पुराना है, काफी काम कर रहा है और वो मौजूद है पाकिस्तान में. आप इन फोरम्स को देख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं. Sorry, what's going on? Somebody has switched on the mic. Okay.
सो अदर देन दैट यंग मीडिएटर फोरम्स है जो इसमें कोलैबोरेट भी कर रहा है. अहमद इज डूइंग रियली ग्रेट वर्क मीडिएशंस को प्रमोट करने के लिए, और आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं. आप कर भी रहे होंगे शायद. लॉविट्स कर रहा है ये सारी. तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लाहौर बहुत ज्यादा हेल्पफुल है. अभी एक सेंटर क्रिएट हो गया है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए उनके पास एक पैनल होगा, और वो पैनल उसके बाद आपको आर्बिट्रेशन हैंडल करेगा, रेगुलेट करेगा, आपको अपॉइंटमेंट में हेल्प करेगा, सब कुछ आपको प्रोसीजर समझाएगा. एंड द इंटरनेशनल सेंटर फॉर एप्रोप्रिएट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड प्रिवेंशन. तो काफी काम हो रहा है पाकिस्तान में भी एडीआर डेवलपमेंट का. दिस वाज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ द सेंटर्स कि आप कौन कौन सेंटर्स को, अगर क्योंकि इंसान कहता है कि मैं अपनी डेवलपमेंट करूं तो आई शुड नो कि मैं कहाँ जाऊं, किससे सीखूं, कहाँ किस चीज को ज्वाइन करूं. सो दीज आर डोमेस्टिकली द सेंटर्स इन पाकिस्तान. आप ज्वाइन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं वो क्या क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में. मूविंग ऑन, हम बात करेंगे द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इन पाकिस्तान. और उस पर हम पहले सबसे, क्योंकि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेम प्रोसीडिंग्स होंगी, थोड़ी सी डिफरेंसेस होंगी, वो कंपैरिजन में आपको क्लियर हो जाएंगी. बट कुछ जो चीजें हैं उसमें सबसे स्टार्ट, पहली चीज जो मैं बताना चाहूंगा वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन होगा. इन द स्लाइड इट्स ऑन द 3rd नंबर, बट सबसे पहले हम न्यूयॉर्क कन्वेंशन पे बात करें तो आप कनेक्ट कर पाएंगे. सो इट वाज बेसिकली द कन्वेंशन, इट्स द ओरिजिनल नेम ऑफ द कन्वेंशन वाज द कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स, जिसको जो न्यूयॉर्क में हुआ था 1958 में. इन यूजुअली इसको न्यूयॉर्क कन्वेंशन ही कहता है. सो पाकिस्तान इस कन्वेंशन का सिग्नेटरी है. पाकिस्तान बीइंग द सिग्नेटरी टू न्यूयॉर्क कन्वेंशन ऑन द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स. ये कन्वेंशन क्या प्रोवाइड करता है? ये कन्वेंशन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स इन मेंबर कंट्रीज. जो इस कन्वेंशन की मेंबर कंट्रीज होती हैं, तो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स को इन्फोर्स करने के लिए, क्योंकि फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स इन्फोर्सिबिलिटी बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान में, और काम हुआ है इस पे काफी ज्यादा. करंटली देयर वाज अ जजमेंट, हम उसकी बात करेंगे बाद में. ऑनरेबल जस्टिस जवाद की काफी ब्रिलियंट जजमेंट थी, उसमें उन्होंने इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड की जिक्र भी किया है. फॉरेन, हम जब इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, सो हम इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की कहते हैं इसको है कि जब भी एक पार्टी इज अ नेशनल पार्टी बट देयर इज अनदर पार्टी जो डिस्प्यूट की पार्टी होती है, वो इंटरनेशनल पार्टी होती है, तो हम उसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कहते हैं. ठीक है. दिस कन्वेंशन जो है, ये कन्वेंशन मैंने जैसे आपको बताया कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. एंड the two basic actions contemplated by the New York Conventions are the recognition and enforcement of foreign arbitral awards, one, and number two is the referral by a court to arbitration. उसको refer करता है court to arbitration. अब Pakistan recognize and enforce awards made in this country that are parties to the New York Convention. हम उसका आगे थोड़े केसेस का जिक्र करेंगे. उसके बाद क्या होता है कि आफ्टर रेक्टिफाइंग द न्यूयॉर्क कन्वेंशन, द पाकिस्तान फर्स्ट ब्रॉट द रिकॉग्निशन. ये जो हम इसके बाद नेक्स्ट के जिक्र करेंगे, जो इसमें पहला है, तो पहले 2005 में एक ऑर्डिनेंस पास होता है. उस ऑर्डिनेंस को हम कहते हैं रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑर्डिनेंस, लेकिन टोटल हम इसको कहते हैं कंप्लीटली द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स एंड फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स ऑर्डिनेंस ऑफ 2005, या सिंपली हम इसको 2005 एग्रीमेंट बोलते हैं, जो कि बाद में इवेंचुअली प्रोमलगेट हुआ और एक्ट बन गया इन 2011, जिसको हम कहते हैं रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड एक्ट ऑफ 2011, द 2011 एक्ट. इस पे बात करते हैं तो जो इसमें पहला स्लाइड आपको नजर आ रहा है, द रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट एक्ट 2011, यह है कि This act incorporate the United Nations Convention on International Trade Law. UNCTRAL जो है उसका एक मॉडल लॉ है, उसको इनकॉर्पोरेट करता है, और इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को इनकॉर्पोरेट करता है इनटू पाकिस्तानी लॉ. It governs the recognition and enforcement of foreign arbitral award in Pakistan and provides a mechanism for enforcing award under international arbitration agreements. ये जो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये जो एक्ट है, ये इनकॉर्पोरेट करता है यूएनसीट्रल मॉडल लॉ को, और किस चीज पे इनकॉर्पोरेट करता है? द इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को इनकॉर्पोरेट करता है पाकिस्तानी लॉ में, जिसके बेस पे हम इसको
ये गवर्न करता है रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को इन पाकिस्तान एंड प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर एनफोर्सिंग अवार्ड्स अंडर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट्स। इसके बाद हम एक और एक्ट की बात करते हैं, उसको ये है द आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट एक्ट 2011। ये एक्ट भी, this was enacted in 2011 and this was enacted to give effect to the convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states। एक्सिट कन्वेंशन काफी ज्यादा मशहूर है और एक्सिट आर्बिट्रेशन भी पाकिस्तान में होती रही हैं, काफी ज्यादा भी होती रही हैं और उसमें पाकिस्तान के काफी बड़े बड़े नाम भी आर्बिट्रेटर्स रह चुके हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, हम इस पर डिटेल करेंगे तो अलग से 1 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, लेकिन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जब भी स्टेट्स और द नेशनल्स ऑफ अदर स्टेट्स के दरमियान जब भी इन्वेस्टमेंट्स हुई और उसका डिस्प्यूट राइज होता है तो उसको सेटल करने के लिए यूजुअली पाकिस्तान या इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जब हम बात करते हैं तो हम एक्सिट कन्वेंशन को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। और एक्सिट यूजुअली है द इंटरनेशनल एक्सिट SID is International Center for Settlement of International Disputes। तो जब पाकिस्तान, हम बात करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन in पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान is a member of एक्सिट, International Center for Settlement of Investment Disputes, which is an institution that facilitates the resolution of investment disputes. Same between members. Can I have my switched off, please? Between the member states and the foreign investors. जो foreign investors होते हैं वो, and this is not just in Pakistan, बाहर मुल्कों में भी ऐसा ही होता है कि एक्सिट कन्वेंशन ही रेगुलेट करता है ज्यादातर, जहां पे इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स की बात हम करते हैं। एक नेशन में, एक मुल्क में किसी ने अपनी इन्वेस्टमेंट की और वहां पे कोई सेटलमेंट इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट आ गया तो उसको सेटल करने के लिए यही कन्वेंशन देखा जाता है। तो पाकिस्तान बीइंग अ मेंबर ऑफ इट आल्सो फॉलो इट, और ये इंस्टीट्यूट फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स को बिटवीन मेंबर्स एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को। The exit framework allows investor to initiate arbitration proceeding against the Pakistani government or vice versa। अगर पाकिस्तानी नेशनल किसी वहां पे जा रहा है तो एक्सिट फ्रेमवर्क दोनों को, इन्वेस्टर्स को और पार्टीज को फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट्स को सेटल करने में। फिर the courts intervention, the courts in Pakistan play a limited role in the international arbitration proceeding. The court can intervene in matters such as the appointment or removal of arbitrators, determining the jurisdiction of जैसे हमने ऊपर बात की, determining the jurisdiction of arbitral tribunals, और उसके अलावा एक वो sitting aside and enforcement of international arbitral awards। हम उसके बाद बात करते हैं notable domestic and international arbitration cases की। तो हाँ, the slide is there। कुछ केसेस, इसके अलावा केसेस बहुत ही ज्यादा डिटेल में और भी केसेस हैं जो इंटरनेशनल और रीसेंट केसेस भी हैं। रीसेंट केस लॉ जो है इंटरनेशनल केस लॉ ऑन आर्बिट्रेशन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फॉर एग्जांपल एक जो इससे अदर दिन दिस बताऊंगा वो है जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड वर्सेस एरोफ्लोट रशिया इंटरनेशनल 2008 में। SCMR 662 है उसका, मियां साकिब निसार ने किया था वो। Other than that, the province of Punjab versus Mohammed Tufail and Company PLD 2017 में सुप्रीम कोर्ट 53 में आप उसको फाइंड कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा हाँ एक अनदर साकिब निसार साहब ने एक और रिमार्केबल जजमेंट थी, कराची डॉक लेबर बोर्ड वर्सेस क्वालिटी बिल्डर्स लिमिटेड 2016 PLD 121 सुप्रीम कोर्ट SC। तो हाँ एक और भी थी, वो 2016 में हुई थी, पाकिस्तान रेलवे थ्रू AGM ट्रैफिक लाहौर वर्सेस फोर ब्रदर्स इंटरनेशनल PLD 2016 199 SC सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो रीसेंट केस लॉ है, अगर आप केस लॉ स्टडी इंटरेस्टेड हैं तो ये कुछ रीसेंट केस लॉस थे जो कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और पाकिस्तान में जो इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अवार्ड की बात करते हैं। इसके अलावा शामिल बुक्स वर्सेस जवाद अनवर केस है, उसके अलावा जी स्मिथ एंड सन्स कॉटन LLC वर्सेस DS इंडस्ट्रीज है, टी जुबैर लिमिटेड वर्सेस जज बैंकिंग कोर्ट लाहौर है 2000 CLC 10405, मौलाना अब्दुल हक बलोच वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान PLD 2013,
तो ये सारे कुछ केसेस हैं जो एग्जिट पे हम गए और वहां पे पाकिस्तान की इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की केस लॉ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ इट को। अच्छा, तो ये जो फ्यू केसेस स्लाइड्स में हैं, ये जो भी मैं केसेस आपको बताएं, ये स्लाइड्स के बगैर हैं। ये और वो रीसेंट है जो कि आपको ज्यादा मैटर करते हैं। पता नहीं मैंने ये वाले क्यों लिखे हैं, उसमें ये नए लिखने चाहिए थे। लेकिन इन 2012 रेंटल पावर प्रोजेक्ट आर्बिट्रेशन, इन 2012 पाकिस्तान फेस्ड several international arbitration cases related to the termination of rental power projects initiated by the government. These cases involve claims brought by the foreign investors under bilateral investment treaties, BITs के through, and other international agreements. उसके अलावा हब पावर कंपनी आर्बिट्रेशन हुई थी 2012 में, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस ये भी था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस था, और इन्वॉल्विंग द हब पावर कंपनी, अ मेजर पावर जनरेशन कंपनी इन पाकिस्तान, अट्रैक्टेड अटेंशन। और उसके बाद द केस इन्वॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन द कंपनी एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अंडर पावर परचेस एग्रीमेंट। उसके अलावा कार के वर्सेस पाकिस्तान जो था, तो उसमें कार के डीनेज कोई एक कंपनी थी, और इलेक्ट्रिक यूरेटम कुछ नाम था, ये एक टर्किश कंपनी थी, और इनिशिएटेड इन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस अगेंस्ट पाकिस्तान इन 2013। The case जो था तो वो arose from the termination of rental power project and involved claims related to breach of contract and expropriations. उसके अलावा रिकोडेक का केस था। रिकोडेक बहुत मशहूर केस है, आप लोगों ने आइडिया होगा भी, पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन में उस पे। रिकोडेक माइनिंग प्रोजेक्ट इन बलूचिस्तान था, और वो लेड बाय हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन केस है। बहुत ज्यादा दुनिया में भी बहुत ज्यादा बातें की जाती है इस बारे में। In 2012 Tatian Copper's company TCC, a joint venture between Barrick Gold and Antofagasta Minerals, initiated arbitration against the government of Pakistan after the project was denied mining rights. अब डिटेल्स में हम नहीं जाते केसेस का, सिर्फ व्यू बता देता हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि आजकल बहुत रिसेंट है, और ये बहुत ही एक प्रोग्रेस वाली बात है पाकिस्तान में इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की। अभी रिसेंटली, वेरी रिसेंटली 2023 में जस्टिस जवाद ने जजमेंट पास की थी। So the Justice Jawad Hassan, Honorable Justice Jawad Hassan of Lahore High Court has recently recognized and enforced a foreign arbitral award passed by the London Court of Arbitration, International Arbitration, LCIA. ये था Treadle International versus Shakarganj Limited, और उन्होंने एक अवार्ड इशू किया था अंडर द न्यूयॉर्क कन्वेंशन 1958 के अंडर अवार्ड इशू किया था। I will share the link of that award with you people in the chat. If I can do that, I'll share it in the chat. मैं chat में उसको ऐड कर देता हूँ, because मैं भूल जाऊंगा फिर, which is important to study. आप लोग, हाँ, I just shared it in the group and in the chat, so आप उसको देख सकते हैं वहां से फिर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, इंटरनेशनल इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल अवार्ड्स का। After that, we will go to the next slide, that is the advantages of domestic and international arbitration in Pakistan. तो ये बेसिकली आप लोगों ने इस पे बातें की भी होंगी, आर्बिट्रेशन के फवाइद पे, कि आर्बिट्रेशन और एडीआरस के फवाइद क्या हैं, तो यूजुअली आप रिलेट कर पाएंगे इससे। बट द एडवांटेजेस मैं समझता हूँ सबसे पहला जो है वो न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी है, बिकॉज आर्बिट्रेशन प्रोवाइड्स पार्टीज विद अ न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल फोरम फॉर रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट. This is particularly important in Pakistan, where parties may have concerns about the impartiality of the local courts. आपको आइडिया होगा, आप रिलेट कर पाएंगे कि impartiality of the local courts की वजह से पार्टीज को कंसर्न होता है, तो वो एक न्यूट्रल और इम्पार्शियल डिसीजन लेने के लिए, अवार्ड लेने के लिए आर्बिट्रेशन को पसंद करते हैं। तो ये आर्बिट्रेशन का सबसे बड़ा अवार्ड है स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान। फिर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, तो द आर्बिट्रेशन अलाउ करता है पार्टीज को to tailor the arbitration process according to their specific needs and preferences. They have the freedom to choose their arbitrators, determine the procedural rules, and decide the language and the seat of arbitration.
the most important I think is the confidentiality काफी ज्यादा मैटर करती है पार्टीज के लिए, खासकर जो कॉर्पोरेट में एंटर होते हैं पार्टीज या जिस भी इशू में पार्टीज एंटर होती है उनके लिए confidentiality बहुत मैटर करती है, जो कि वो कोर्ट से अटेंड नहीं कर सकती. So confidentiality is the primary feature of arbitration. The arbitration proceedings in Pakistan are generally confidential, ensuring that sensitive information and trade secrets remain protected. This can be, I believe, this can be partially advantageous in commercial dispute where maintaining confidentiality is crucial for business interest. Other than that, we talk about the expertise and specialization. The parties have the opportunity to select arbitrators with expertise in the relevant field. You see that ensuring that the dispute is resolved by individuals with specific knowledge and understanding of the subject matter. Let me put it in this manner कि हम कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशंस की जब बात करते हैं, जब हम कोर्ट्स में जाते हैं तो कंस्ट्रक्शन टेक्निकलिटीज को समझने के लिए उनको एक एक्सपर्ट रखना होता है और समहाउ लाइक दैट. अलबत्ता अगर हम आर्बिट्रेशन जाते हैं कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन में, तो वी चूज इन आर्बिट्रेशन हु इज नॉट अ लॉयर बट हु इज एन इंजीनियर, अ प्रोफेशनल इंजीनियर जो डिस्प्यूट्स को समझ सकता है और डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकता है. तो आप किसी भी फील्ड से स्पेसिफिक फील्ड के आर्बिट्रेटर को चूज करके स्पेशलाइज्ड बंदे को चूज करके अपना dispute resolve कर सकते हैं, उस तरफ जा सकते हैं. और I believe this can lead for more informed and efficient decision making. Other than that, the enforceability of awards, Pakistan is being the signatory of New York Convention on the recognition of enforcement of foreign arbitral award. We talked about it already. That facilitates the recognition and enforcement of arbitral award both domestically and internationally. This enhances the enforceability of awards and provide parties with more reliable mechanism for obtaining relief. I think इसको और हम इसको advantages होती भी हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी होती हैं. आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं आर्बिट्रेशन में, आप कोर्ट में वैसे ही घबराए होते हैं. आप लिस्ट टाइम में, जो अगर मैं इसको एडवांटेजेस में जाऊं तो लिस्ट टाइम में आप अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व कर सकते हैं. ज्यादा जो अदालत में कोर्ट्स में आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स होती हैं, आप बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं आपके वहाँ पे, तो आर्बिट्रेशन में वो समहाउ एक्चुअली ये कहा जाता है कि इकोनॉमिकल होता है, बट आर्बिट्रेशन समहाउ इज मोर expensive than this, but usually less expensive than litigation. Litigation के penalties भी बहुत ज़्यादा होती हैं. इसमें बहुत ज़्यादा आप अपनी बात अच्छे तरीके से कर पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे तरीके से कर पाते हैं. एक प्रेशर भी बहुत ज़्यादा नहीं रहता, आप बहुत इजी एनवायरनमेंट में अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने केस को प्रेजेंट कर पाते हैं. और हेयरिंग्स भी बड़े फ्लेक्सिबल तरीके से होती हैं. सो यूजुअली यही होता है आर्बिट्रेशन इंटरनेशनली और नेशनली डोमेस्टिक आर्बिट्रेशंस में. और इस मूविंग टुवर्ड्स चैलेंजेस, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जो आपको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन और उस प्रोसीडिंग से थ्रू करती हैं. आई रिसेंटली वेंट टू वियना. वियना में हर साल, वियना में भी और हांगकांग में भी, गुलाम मोहम्मद, speaker of yesterday's session, he was also there and he is very much involved in all of this moots. तो आप वो आर्बिट्रेशन मूड्स होती हैं, जैसे यहाँ पे लॉ मूट कोर्ट्स होती हैं, वहाँ पे आर्बिट्रेशन मूड्स होती हैं. और वो आपको एक्चुअली आर्बिट्रेशन में, can you please not do that please, तो आप उसको एक्चुअली आर्बिट्रेशन में आपको इन्वॉल्व कर देते हैं वो. एंड दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग and hectic at the same time, but getting a good teacher, I think it will really helpful for you. But moods में involve हो जाएं, बहुत से moods होती हैं. If you want some help in that, you can get connected to me. I'll share my LinkedIn in the chat, or I'll also share my email. आप मुझसे connect हो सकते हैं. Because काफी ज़्यादा स्टूडेंट्स आज भी एक ईमेल करते हैं, हमारे एक रिसर्च चल रही है आर्बिट्रेशन पे, हमें उसमें आर्बिट्रेशन लॉयर की ज़रूरत है उसके इनपुट की. तो if you need, you should research in this field, और आप उसमें आगे जा सकते हैं. So the challenges to domestic and international arbitration में सबसे पहले हम बात करते हैं lack of awareness and understanding की. अब देखें, many businesses in Pakistan and individuals even in Pakistan are not fully aware of the advantages and procedures of arbitration. There is a need to increase the awareness and education to promote the use of arbitration as an effective alternative to legislation. To litigation. तो लोगों को बताना चाहिए हमें कि लोगों को ये वे ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट है. ज्यादातर बिजनेसमैन जो होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उनको नहीं पता. उनको बताना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए, ताकि अपने राइट्स को, अपने एसेट्स को प्रोटेक्ट कर सकें, प्रिजर्व कर सकें.
उसके बाद अदर चैलेंज डिलेज इन प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज। अब देखें डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन जो पाकिस्तान में होती हैं वो सफर करती हैं डिलेज इन प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज को, partly due to the lack of specialized arbitration arbitration courts जो है वो specialized arbitration courts पाकिस्तान में है नहीं। उसके अलावा because I believe that the heavy case load on regular courts that may be involved in arbitration process, बहुत ज्यादा लोड होता है कोर्ट्स के ऊपर, तो वो आर्बिट्रेशन प्रोसेस काफी लेंथी हो जाता है। इस वजह से इस लेंथी प्रोसेस और डिले की वजह से जो है तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है इफेक्ट होती है। उसके अलावा द लिमिटेड पूल ऑफ क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर्स, देखिए आर्बिट्रेशन सेंटर्स अब बन गए हैं तो अब क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर्स भी आ जाएंगे, बट अभी पाकिस्तान फेस कर रहा है शॉर्टेज क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर्स को, particularly those with specialized expertise in certain industries. For example, I am new in the law field, but I have been an engineer before. And हम जब तब भी arbitrations करते थे तो हमें ये फील होता था, लेकिन जब मैं कंस्ट्रक्शन आर्बिट्रेशन में आया हूँ, सो आई हैव अ ह्यूज अमाउंट ऑफ केसेस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन के पाकिस्तान में स्पेसिफिक क्वालिफाइड फील्ड के एक्सपर्टीज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है या कोई ठेकेदार आपके पास आता है, तो आपको वो जब कहता है कि मेरा ये डिस्प्यूट है, तो एक लॉयर उसको टेक्निकलिटीज को नहीं समझ सकता और एक इंजीनियर जो है उसकी लीगलिटीज को नहीं समझ सकता। सो दिस फील्ड, जब आप इंजीनियरिंग टेक्निकलिटीज को भी समझते हैं और आप लीगलिटीज को भी समझते हैं, सो दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट फील्ड फॉर यू देन। तो उस वजह से हम समझते हैं कि लिमिटेड पूल ऑफ क्वालिफाइड आर्बिट्रेटर्स की जरूरत है डिफरेंट फील्ड्स में। This can lead to challenges in selection and appointment of suitable arbitrators, also the potentially affecting the quality and efficiency of the arbitration process. उसके बाद हम जुडिशियल इंटरवेंशन, मैंने आपको बता दिया कि किस तरह जुडिशियल इंटरवेंशन की वजह से वो बहुत ज्यादा मसले बन जाते हैं। वही चीज जो आपने आर्बिट्रेशन में चाहिए थी कि जल्दी डिस्प्यूट हल हो जाए, वो लंबा होता जाता है और आखिर में फिर से लिटिगेशन में जाके दोबारा से वही सब कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए था। And such interferences जो मैं समझता हूँ कि can undermine the autonomy and finality of the arbitration award, eroding the confidence of parties in the process. तो आप parties को confident करने के लिए उनको बताएंगे कि जो award है ये आप rule of court, आपका award है, आपकी मर्जी से हुआ है, आपकी consent से हुआ है, तो आप इस पे agree कर रहे हैं, तो यही prevail करेगा। अगर कोर्ट उसमें intervention नहीं करेगी तो ये चीज parties के confidence बहाल करेगी। And the limited institutional framework, although I believe Pakistan has seen the establishment of sub-arbitration institutions now, there is still need for further development and promotion of institutional arbitration. Strong and reputable arbitration institutions can provide parties with administrative supports, I believe, and guidance and specialized services, enhancing the overall arbitration experience. आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम बात करेंगे, can I have the next slide? I think the most important slide would be ये के, give me a minute. Okay. हाँ, हम इस पे बात करेंगे the basics applicable laws. As to applicable laws comparison क्या है, scope of application क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कोर्ट इंटरवेंशन दोनों की क्या सीन है, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट्स का दोनों का क्या सिचुएशन है, आर्बिट्रल अवार्ड्स की और लैंग्वेज इन आर्बिट्रेटर सीट्स की। सबसे पहले द एप्लीकेबल लॉज, हम ऊपर बात कर चुके हैं, मैं सिर्फ रिलेट करूंगा, मैं आखिर में इसको इसलिए लाऊं ताकि आपको ऊपर चीजों की समझ आ जाए। अब आप रिलेट कर पाएंगे कि हम किस बारे में, जब हम यूनिसेट्रल बोल रहे हैं, हम एक्सेट बोल रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये किस चीज के बारे में बात हो रही है। So in domestic, the applicable laws, as to applicable laws, in domestic arbitration, the primary legislation governing domestic arbitration in Pakistan, as we talked about, is the Arbitration Act of 1940, जो कि overall पाकिस्तान की overall territory में वो govern करता है। International arbitration in Pakistan is primarily governed by the Arbitration International Investment Dispute Act 2011, which incorporates the UNCITRAL model law on the international commercial arbitration. स्कोप ऑफ एप्लीकेशन की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 जो गवर्न करता है applies to all of the dispute of civil nature arising out of contractual or non-contractual relationship, except specifically excluded under the act। कुछ चीजें एक्सक्लूड हुई हैं एक्ट के अंदर, उसको एक्सक्लूड करके वो ओवरऑल स्कोप ऑफ एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई होता है पाकिस्तान में कॉन्ट्रेक्चुअल और नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप ऑफ सिविल नेचर और डिस्प्यूट पे। इंटरनेशनली
the Arbitration Act 2011, the International Investment Dispute wala, applies to international commercial arbitration, including disputes arising out of international commercial contracts and investments involving foreign entities. वहां पे हम उसकी स्कोप को बताते हैं कि पाकिस्तान में लिमिटेड है, ये जो है तो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात होती है यहाँ पे, जो कि इंटरनेशनल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो सकती हैं और इन्वेस्टमेंट से भी होती हैं, जो फॉरेन एंटिटीज की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. कोर्ट्स इंटरवेंशन की बात करते हैं तो द third है, हाँ, as to court of intervention, so the Arbitration Act 1940s allows for significant court intervention, जो कि गलत है, including the power of court to stay court proceedings in favor of arbitration and to set aside or remit arbitral awards on certain grounds. जबकि जब हम कोर्ट इंटरवेंशन की बात करते हैं इंटरनेशनल में, तो द आर्बिट्रेशन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट एक्ट 2011 adopts a pro-arbitration approach aligned with the UN Central Model Law, limiting the court intervention and providing more support to the enforcement of international arbitral awards. हमने इसके ऊपर बात की है कि वो कोर्ट आर्बिट्रेशन के बजाय वो अपने मॉडल लॉ पे जाते हैं, जो कि लिमिट करता है कोर्ट की इंटरवेंशन को. और उससे होता क्या है कि उससे पार्टीज को एक कॉन्फिडेंस मिलता है प्रोसेस पे, कॉन्फिडेंट होते हैं प्रोसेस पे कि प्रोसेस जो है वो उनके फायदे के लिए हो रहा है, और हम आखिर में लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, जबकि आर्बिट्रेशन ही हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देगा. As to the other one is as to arbitrator appointment, under the Arbitration Act 1940, arbitrators are typically appointed by mutual agreements of the party. If the parties fail to agree, the court has the authority to appoint an arbitrator. But on the other hand, in the international arena, the Arbitration International Investment Dispute Act 2011 in Pakistan allows party to freely choose the method of arbitrator appointment. Hope the difference is very much clear there. Okay, allows party to freely choose arbitrator appointment. If the parties cannot agree, the default procedure is to appoint arbitrators to an appointing authority designated in the arbitration agreement or chosen by the parties. होता क्या है, I'm recently involved in international dispute board arbitration में, और उसमें ये होता है कि आपको ये आपको कहते हैं कि जनाब आप arbitration क्लॉज के अंदर ये लिखा होता है कि आप आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट जब करेंगे तो आर्बिट्रेटर आप अपॉइंट कर लेंगे अपनी मर्जी से. लेकिन अगर आप लोग ना कर पाए या किसी भी मैनर पे आर्बिट्रेशन में आप लोग दोनों पार्टीज एक चीज पे राजी ना हो पाए, then it shall go to the tribunals. For example, usually ICC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात करते हैं, एक्सेट की बात करते हैं, तो वो आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखा होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन लॉ के मुताबिक, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एक्ट ऑफ 2011 के मुताबिक, कि उसमें सेंटर लिखा होता है या डिजिग्नेटेड होती है अथॉरिटी के, कौन सी अथॉरिटी पे अगर दोनों पार्टीज ना कर पाए तो बात किस अथॉरिटी के पास जाएगी. उसके बाद हम बात करते हैं आर्बिट्रल अवार्ड्स की. आई एम कंक्लूडिंग बिकॉज आई नो के कभी कभी लीगल डिस्कशंस जो होती हैं या इस तरह की बातें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा इंसान को बोर कर देती हैं. I have huge respect and applause for you people कि आप लोग इतने बड़े तादाद में कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं. This is really bright future. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. And I hope कि आप लोगों में से कुछ लोगों को मैं अपने साथ आर्बिट्रेशन और डिस्प्यूट्स बोर्ड में एसोसिएट्स के तौर पे इन्वॉल्व कर सकूं, ताकि म्यूचुअली बेनिफिट हो सके एक दूसरे को और आप लोगों को लर्निंग का मौका मिले और मुझे एक ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री मिले. So arbitral awards की जब हम बात करते हैं तो domestic arbitral awards are subject to challenges and can be set aside or remitted by the courts under specific grounds provided in the Arbitration Act 1940. Whereas in the international arena, the international arbitral awards are subject to limited grounds for challenge. बहुत limited grounds होती हैं उसको challenge करने की, as outlined in the Arbitration International Investment Dispute Act 2011, जिसका हम ऊपर जिक्र कर चुके थे, which align with the UN Central Model Law. Pakistani courts are generally supportive of the recognition and enforcement of international arbitral awards. आपको जजमेंट का जो लिंक आपके साथ मैंने शेयर किया, आप उसको पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तानी courts are actually really supporting now the recognition and enforcement of international arbitral awards. And the last of all, we will talk about the as to language and arbitration seat. So the choice of language and seat of arbitration in domestic cases is generally determined by the parties in their arbitration agreement
or as agreed upon during the proceedings. प्रोसीडिंग्स में आपको कहा है कि पहली जो मीटिंग होती है प्रिलिमिनरी मीटिंग होती है, उसमें सारा कुछ डिसाइड हो जाता है कि जनाब हम किस जुबान में ओवरऑल कम्युनिकेट करेंगे, हमारी सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होगी, हेयरिंग्स होगी तो यहाँ पे हो सकती हैं, अगर आर्बिट्रेटर दूसरी सिटी से आता है तो उसको टीए मैनेज होती है, सब कुछ उसी प्रिलिमिनरी मीटिंग में सेट हो जाता है, क्योंकि पार्टीज भी होती हैं और आर्बिट्रेटर्स भी बैठे होते हैं. In international disputes, the parties have the freedom to determine the language and the seat of arbitration in international cases subject to their agreement as to determined by the arbitral tribunal. Same procedures होते हैं arbitration में भी, parties ही decide करती हैं कि हमारी language क्या होगी और seat of arbitration क्या. I think that's the basic overview of the domestic and international arbitration in Pakistan. Some of the question that rises usually are what legislation applies to arbitration in Pakistan, तो उसकी हमने बात कर ली है, clear हो चुका होगा. उसके अलावा कि Pakistan is signatory to New York Convention, so yes, Pakistan is signatory to New York Convention. और आर्बिट्रल इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने आर्बिट्रेशन डेवलपमेंट में बता दिया कि हाँ करते हैं. पहले सिर्फ सीखा करता था, बहुत से आर्बिट्रल अवार्ड्स वो जो हैं वो बन रहे हैं. अभी इन 2023 हाई कोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने वो भी कर दिया कि अगर कोई अपना सेंटर रजिस्टर कर सकता है मिनिस्ट्री के साथ, तो अपना सेंटर रजिस्टर करवा दें और वो फिर आर्बिट्रेशन की सर्विसेज जो हैं वो डोमेस्टिकली और मीडिएशन और आर्बिट्रेशन सर्विसेज डोमेस्टिकली इंटरनेशनली दे सकता है. I think that would be all from my end. I hope I make sense to you people. And हाँ, क्रिमिनल केसेस तो आप देखें, हम जब बात करते हैं क्रिमिनल की तो जरगे में तो यही होता था ना पहले भी, तो इंडिया आर्बिट्रेशन हो सकती है क्रिमिनल के लिए भी अगर दोनों पार्टीज एग्री हो. देखें, हमारे एक उस्ताद हैं आर्बिट्रेशन के, वो कहते हैं कि when we talking about ADRs, तो ADRs को हम एक ही वर्ड में डिफाइन करते हैं और वो वर्ड है जनाब कंसेंट. आप कंसेंट में ही ADRs को डिफाइन करते हैं. अगर दोनों पार्टीज की कंसेंट है तो आप क्रिमिनल मैटर्स को भी उसमें हैंडल कर सकते हैं. अब आते हैं क्वेश्चंस पे, कहाँ से स्टार्ट करें. अच्छा, मैं ऊपर से जाता हूँ. Okay, reply to the if it standard is the time but process is different under section 41 filed. जबरदस्त मिनहास यार. Inshallah, of course, sir, inshallah. I don't know आप लोगों ने किस पे इंशाल्लाह बोला, किस पे of course बोला. I'm so sorry for that. I'm just checking the comments now. Really, thank you, Tufail. How does this Pakistani legal system handle the issue of arbitrator bias and conflict of interest, and what measures can be taken to promote transparency and accountability? अच्छा, फातिमा, point is कि arbitration act में एक बात लिखी होती है, the termination of the arbitrator. तो अगर आप arbitrator के biasness का issue होता है तो कोई भी पार्टी और both the parties वो टर्मिनेशन कर सकती है आर्बिट्रेटर का, और वो ही आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में वो सब कुछ प्रोसीडिंग लिखी हुई है कि हाउ इफ, बट द इशू मस्ट बी मतलब एक क्लियर फैक्चुअल इशू हो, ना कि सिर्फ इस वजह से कि आपको फील हो कि ये हो रहा है. एंड इवन ये भी होता है कि जब आप आर्बिट्रेशन अवार्ड लिखते हैं तो एट द एंड ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड आप एक सर्टिफिकेट साइन करते हैं दोनों पार्टीज का, जिस पे क्लियर लिखा होता है कि हमें अच्छी तरीके से सुना गया, हमारे एविडेंस को अच्छी तरीके से एग्जामिन किया गया, हमारी बात को पूरी तरह से सुना गया. एंड वो सारी चीजें अगर ना की गई हो तो आप साइन नहीं करते, और आप साइन नहीं करते तो आर्बिट्रेशन अवार्ड कभी भी वो रूल ऑफ कोर्ट नहीं बनता. रूल कोर्ट में जाके वो वहां पे ही सेटिस्फाइड हो जाता है और आप दोबारा से उसी प्रोसेस में आते हैं और वो सब कुछ. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ये है कि जब आप जो पार्टीज होती है उनको अवेयर किया जाए. इसलिए सेंटर्स बनते हैं कि जब आप सेंटर के पास, पार्टी सेंटर के पास जाती है कि हमारे वाले कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाए, तो पार्टीज को अवेयर करने के लिए सेंटर अपना इनपुट देती है, उनको बताती है कि हाउ द आर्बिट्रेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस और क्या क्या किस तरह से होता है. तो पार्टीज को पता होता है कि हम किस चीज में एंटर हो रहे हैं और वो किस तरह से हम उसको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल कर सकते हैं, क्योंकि सब कुछ आपके सामने ही हो रहा है, आपके आर्बिट्रेटर के, आपका अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर के सामने हो रहा है जो आपके इंटरेस्ट को डिफेंड करता है.
I hope that answers the question. We are in Q&A session now. Please ask. Is that yes? It is applicable in employment law. I recently had it arbitration in employment law. It's because things are getting unfold, which ultimately increase interest. Thank you, Minhas. Yes, how Pakistan okay. नीचे सर विलेज में वडेरा फैसले करते हैं वो भी नहीं वो आर्बिट्रेशन में एक तरह से अली नवाज इट्स अ गुड क्वेश्चन लेकिन वो देखें वो आर्बिट्रेशन पैटर्न काइंड ऑफ सेम होता है लेकिन वो जो होता है तो वो उसको इन्फोर्सिबिलिटी सोशल प्रेशर की वजह से इन्फोर्सिबिलिटी है लीगल ग्राउंड्स की वजह से उसकी इन्फोर्सिबिलिटी नहीं है और वो आर्बिट्रेशन नहीं होती वो वडेरा सिस्टम वो पैटर्न सेम है लेकिन आर्बिट्रेशन सिस्टम को हम आर्बिट्रेशन हम उसको कहते हैं जो आर्बिट्रेशन एक्ट को रेगुलेट के गवर्न करे और जो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंडर हो उसके लिए एक एग्रीमेंट होता है गांव में अब ये हो रहा है कि मैंने जैसे आपको इस पूरे लेक्चर में एक जिक्र किया था डीआरसीज का तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स बन रहे हैं और उन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स की ट्रेनिंग हो रही है तो जो आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट होते हैं या मशरान हम पश्तो में उसको मशरान बोलते हैं और जो आपके वडेरा को आई डोंट नो कि व्हाट्स आई थिंक वेदर इज अ प्रॉपर वर्ड और नॉट बट जो भी आप उसको वर्ड बोलते हैं तो वो जो बड़े होते हैं तो उनको ट्रेन किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है और फिर उसको हम एक बोलते हैं जरगा सिस्टम में उसको बोलते हैं सरकारी जरगा तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोग उसमें बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि आर्बिट्रेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से कैरी आउट हो रही या नहीं हो रही तो जो यूजुअली मैं समझता हूँ कि 80% जो पाकिस्तान में विलेजेस में होता है तो वो आर्बिट्रेशन को एक्ट 1940 के अंडर नहीं होते तो इसलिए उसको हम आर्बिट्रेशन में नहीं लाते डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के और तरीकों में आ जाता है कि समहाउ लोकली वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ व्हाट प्रैक्टिकल स्टेप कैन आई टेक टू ईमेल मी रेयान देखिए स्टेप्स यू नीड टू get involved in different certificate courses. I'm really happy to see Ahsan and Ahmad और ये लोग काफी help कर रहे हैं youngsters की कि उनको courses का बताएं उनके लिए course बनाए there is an institute by the name of ADR Institute वो courses offer करती हैं पाकिस्तान मीडिएटर वो कोर्सेज ऑफर करती है एडीआर ओडीआर कोर्सेज ऑफर करते हैं इस जुडिशियल एकेडमी के कोर्सेज देखें जुडिशियल एकेडमी हर एक प्रोविंस में भी और इस्लामाबाद में भी जुडिशियल एकेडमी होती है वो कोर्सेज ऑफर करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होती है फैमिली लॉ और शरिया लॉ के लिए शरिया एकेडमी इन इस्लामाबाद इज रियली रियली डूइंग गुड वो कोर्सेज ऑफर करते हैं इस तरह से if it's decided in an agreement that the award shall be binding upon the parties even they are aggrieved party में चैलेंज हाँ कर लेते हैं बाइंडिंग का साइन भी कर चुके होते हैं लेकिन फिर भी वो डिफरेंट 3 ग्राउंड्स जो मैंने आपको बताया उन 3 ग्राउंड्स पे चले जाते हैं उसमें कोर्ट के उस प्रोसीडिंग्स में सर आर्बिट्रेशन में कुछ प्रोसीडिंग्स की हो जाते हैं फेज आई थिंक हाँ होते हैं प्रेसिडेंट काफी यूज होते हैं लेकिन एक्चुअली उसकी देखें आप एक चीज को समझ लें कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस के वक्त एक आर्बिट्रेटर होता है पार्टी कैन आइदर प्रेजेंट देमसेल्व्स बाय देयर ऑन और इफ हेयरिंग में वो अपने साथ की कौंसल ले आए तो अपने साथ कौंसल ले आते हैं हेयरिंग्स में आर्बिट्रेटर्स की जब हेयरिंग्स करवाते हैं तो अपने साथ काउंसिल ले आते हैं तो उन काउंसिल में उनके राइट्स को उनके इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए लीगल टच देने के लिए बहुत ज्यादा फॉर एग्जांपल हमने एक आर्बिट्रेशन की थी और उसमें बाबर सत्तार साहब जो थे वो काउंसिल थे एक पार्टी की तरफ से और दूसरी पार्टी की तरफ से मियां गुल साहब वो थे आई वाज एन स्टूडेंट ऑफ लॉ एट दैट टाइम स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग दैट टाइम और आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू सिट इन दैट आर्बिट्रेशन तो आप काउंसिल को ले आते हैं तो काउंसिल ऑटोमेटिकली उसमें प्रेसिडेंट्स को हेयरिंग में पुट फॉरवर्ड करते हैं आर्बिट्रेटर को आर्बिट्रेटर हैज अ ह्यूज रिगार्ड फॉर दैट क्योंकि लीगल साइड को कॉन्ट्रैक्ट देखिए आर्बिट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आर्बिट्रेशन एक्ट दोनों बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं तो आप दोनों को प्रेसिडेंट्स को भी देखते हैं और आप उसके रिगार्डिंग ही लीगली साउंड डिसीजन अवार्ड अनाउंस करते हैं इसलिए अगर लीगल जो आर्बिट्रेटर वो टेक्निकल ना हो तो वो लीगल एक्सपर्ट को हायर करके उसको लीगल कर देता कैन आर्बिट्रेटर राइज्ड. Rehan, I'm so sorry, I'm not understanding your question.
कैन आर्बिट्रेटर, अगर उसको आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो मैं समझा लेता हूँ। हाँ तुफेल, एडीआर सब्जेक्ट है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली उसके उस्ताद नहीं है। When I was in my law degree, I wanted to go for the optional subjects होती हैं. I did my 3-year law. तो उसमें optional subjects थे, and unfortunately there was no teacher to teach me ADRs. Then I had to, वो फिर बड़ा expensive तरीके से learning हुई है। लेकिन हाँ subjects हैं, कोर्स में भी हैं। ये बहुत अच्छी बात है आपने मेंशन की कि सिलेबस में, टेक्स्ट बुक्स में लॉ जो वो हमारे हैं बार काउंसिल जो हैं उनको चाहिए कि वो सिलेबसेस में इन चीज़ों को चेक करें, मेक श्योर करें कि यूनिवर्सिटीज़ में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उसमें एडीआर का सब्जेक्ट जरूर पढ़ाया जाए। और अब इस पे काम हो भी रहा है, अब लोगों को समझ आ रही है, ग्रेनिया इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं। What's the view of Pakistani president if fraud is involved? The same goes for fraud. जो fraud में है वो ही पे हेयरिंग पे सुना दी जाती हैं, और वो असल में जो है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में जब हम बात करते हैं तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। तो जब अनड्यू इन्फ्लुएंस आ जाता है या फ्रॉड हो जाता है, फ्रॉडुलेंट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट, वो तो वाइड हो जाता है, वो तो बेस ही नहीं करता। आर्बिट्रेशन एक्ट इज एडीआर, आर्बिट्रेशन एक्ट इज एडीआर, मसला ये आर्बिट्रेशन एक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा। Okay. If a property disputes which is located in Lahore and parties are living at Islamabad, can the parties appoint? हाँ, ये तो parties, यही तो flexibility है रेहान, कि वो parties अपनी मर्जी से appoint कर सकती हैं। सिर्फ ये है कि अगर आप इस्लामाबाद में arbitrator को appoint कर रहे हैं और आप सीट ऑफ आर्बिट्रेशन की जगह देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि आर्बिट्रेशन इस्लामाबाद में होंगी, तो अगर उनमें से कोई एक आर्बिट्रेटर भी लाहौर का है और लाहौर से इस्लामाबाद आएगा, तो आप उनको फिर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर देंगे कि टीएडीए किस तरह दिया जाएगा। इज द ट्रू दैट प्रेजेंट और नॉट? नहीं, इट्स नॉट कंप्लीटली ट्रू। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एन ऑफेंस टू बी ट्राइड बाय मीडिएटर? नाजिम, आप मीडिएशन की बात, मीडिएटर्स की, इट्स नॉट रिलेवेंट टू आर्बिट्रेटर बट डेफिनेटली आई आंसर इट कि 302 पीबीसी में देखें, हम दियत की बात अक्सर करते हैं, ठीक है? तो दियत में क्या होता है कि दोनों पार्टीज बैठते हैं कि हम दियत दे देंगे इस बात के लिए, तो वो कोर्ट में तो जरूर नहीं है कि जाए, वो गांव में एक बंदे को सालिसी मुकर्रर करके वो फैसला कर देता है। लेकिन मीडिएशन की खूबसूरती ये है कि प्रोपोर्शनलिटी ऑफ द क्राइम इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, बट मीडिएशन की खूबसूरती ये है कि वो दोनों पार्टीज के कंसेंट से होता है। द मीडिएटर का कोई रोल उसमें फैसिलिटेशन के अलावा नहीं होता। होता यह है कि जब हम इशू की बात, डिस्प्यूट की बात करते हैं, तो समवेयर बैक इन आवर माइंड डिस्प्यूट कुछ और होता है, वो जो सामने होता है वो सिर्फ हमें दिखता है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ मीडिएटर? ही डिस्टेबलाइज द इशू, ही डिस्टेबलाइज द सिचुएशन। वो बताता है कि इशू क्या है, उस इशू को बताने के बाद वो पार्टीज को ये इख्तियार देता है कि वो अपने लिए खुद डिसाइड करे। सो इफ द पार्टीज आर एक्सेप्टिंग द रिजोल्यूशन आर गोइंग फॉर रिजोल्यूशन टुगेदर, कि हम ये रिजॉल्व करते हैं, हम ये एक्सेप्ट करते हैं और इससे हमारा डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं, तो एट द एंड ऑफ इट आप मीडिएशन एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, और वो कोर्ट में ले जाके उसको भी रूल ऑफ कोर्ट बनाते हैं। तो मीडिएशन जो है वो पोर्ट डिफरेंट है औरों से, क्योंकि मीडिएशन इज द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, द मीडिएटर इज जस्ट देयर टू रेगुलेट और फैसिलिटेट देम। वो इन्फोर्स नहीं होता ना, कोर्ट में जाता है आतिफ। अब वो कोर्ट में जाके कोर्ट में वही प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन वो दोनों पार्टीज के लिए वही सरदर्द बन जाता है कि आप पूरा कोर्ट का प्रोसीडिंग्स, और सालों सालों तक वो चीज चलती जाती है। हाँ उमैमा, यूजुअली आर्बिट्रेटर्स सिटीज ही बन रहे हैं आजकल। lenient way and also keep in mind that nobody ना आर्बिट्रेटर्स दोनों की कंसेंट से अगर हो तो वो तो फिर दोनों lenient way is a vague term, Haqil. I'm sorry if I'm saying it, but ये एक बहुत vague term है. It's based on the evidences and it's based on the submissions. So not in the lenient, हम नहीं कह सकते lenient तो ये हो जाता है कि आप फेवर कर रहे हैं या आप easy हो रहे हैं। Arbitrator easy नहीं होते, they are going into the details and the very nitty gritty details of the evidences and submissions.
No, it does not restrict a lawyer from Shazia. It does not restrict a lawyer from traditional litigation. हमारा बड़ा misconception है कि हम कह रहे हैं कि वकील, और सबसे बड़ा obstacle भी ये है, वकील litigation को नहीं छोड़ रहे, conventional law practice कर रहे हैं, जबकि ये एक सबसे suitable field जो है ये वकीलों के लिए ही है, क्योंकि दे हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ, उसको आखिर में इन्फोर्स करने के लिए आप लॉ कोर्ट में ही जाते हैं, और दूसरा ये कि वकीलों में सुनने की भी एक वो होती है, वो सुनते भी हैं. सो आई थिंक इट्स डज नॉट रिस्ट्रिक्ट. फॉर एग्जांपल लॉयर लाइक मी, I didn't feel कि ये रिस्ट्रिक्ट करता है. हाँ, I love ADRs more than the traditional litigation because traditional litigation में अगर नाम बनाऊंगा या मैं कुछ करूंगा, अगर मैं करता ये, तो मुझे 30 साल तो लगने ही थे, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग हैं ट्रेडिशनल लिटिगेशन में, जो उनको compete करना, उनकी लेवल पे आना बहुत टाइम लगता. मुझे इतने बुढ़ापे तक नाम नहीं बनाना, नाम अभी बनाना है. तो ADR is a new thing, and I think engaging into it was benefiting me, and it does not restrict me from ट्रेडिशनल लिटिगेशन में करता हूँ. मैं कोर्ट प्लीडिंग्स भी करता हूँ, इवन जिस चीज को मैं आर्बिट्रेट कर देता हूँ उसको प्लीड भी कर सकता हूँ. सो दैट्स आई थिंक benefit for lawyers. Allahu Akbar. 60 messages, steps of execution awards and effects and speedies. The steps तो मैंने आपको बता दी है रूबा, मैंने उसमें बता दी आपको, क्या कहते हैं प्रोसीजर में. Mujahid, what should a student of third RD semester he should study? What is the complete name? सिर्फ BAKH नजर आ रहा है. सर ऐसी कोई अथॉरिटी है क्या पाकिस्तान में, जैसे कोर्ट सिस्टम में पुलिस? ADR एक्ट 1940 ही अथॉरिटी है. कोई भी अथॉरिटी जो थी वो एक्ट के अंडर आती है, तो रेगुलेशन एक्ट है 1940, वही रेगुलेट करता है. Replying to suit for specific Zindabad. If the chosen arbiter like the necessary understanding of the wanted, definitely it's going to affect the necessary, it's going to affect the decision making. लेकिन देखिए ये भी पार्टीज पे आता है ना, क्योंकि डिसाइड पार्टीज करते हैं आर्बिट्रेटर्स को. Can a common citizen like a not a lawyer? Yes, a lot of them are. वजाहत बहुत से जो हैं इंजीनियर जो हैं कंस्ट्रक्शन लिटिगेशन में, मैं जिनके साथ आर्बिट्रेशंस करता हूं तो वो सारे 70 और 75 और इतने सालों के बाबे होते हैं, और वो वकील नहीं होते, वो इंजीनियर्स होते हैं या प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट्स होते हैं, समथिंग लाइक दैट. ADR itself is a pre-action protocol kind of thing. Pre-action protocol अभी हो रहे हैं पाकिस्तान में, exist भी नहीं करते, but ADR itself is a kind of pre-action protocol. Thank you, Fiza. Yes, after its enforcement. नहीं आलिया, enforcement तो कोर्ट ही करता है, तो जब enforcement होगी तो आप कोर्ट के खिलाफ तो नहीं जाते. Thank you, Shahzaman. So, sir, I want to work on ADR. Currently, I am currently मुझे आपका पूरा नाम नजर नहीं आ रहा. I am leaving. मैं यहाँ पे वो करता हूँ, अपना LinkedIn का लिंक छोड़ता हूँ. काइंडली मुझे जिसको हेल्प चाहिए या कुछ भी, तो काइंडली मुझे LinkedIn, मैंने अपना लिंक ऐड कर दिया, तो अगर आप लोग LinkedIn पे कनेक्ट हो जाएं तो मैं आपकी हेल्प कर सकूंगा. इन एक्चुअल अभी यहाँ पे डेफिनेटली आई डोंट नो किस क्वेश्चन पे था मैं. हाँ, MU मोहम्मद है कुछ, बट मुझे पूरा नाम नजर नहीं आ रहा. सो आई डेफिनेटली हेल्प यू. इस्लामाबाद में भी है तो डेफिनेटली विजिट माय ऑफिस. इंडिविजुअल पर्सन कैन, यस, if there is a permission by the arbitrator, वो participate कर सकता है, observe कर सकता है, but the permission of the arbitrators and the parties. Can arbitrator be used soft? हाँ, सिकंदर. Thank you sir. ADR क्वेश्चन आया था हमारे सेमेस्टर, बट हमें इसके बारे में कुछ जो भी नहीं पढ़ा गया था. Thank you sir. Thank you so very much. Tufail. आतिफ, मैं आंसर कर चुका हूँ इस बात का. It's necessity. No, it's not necessity कि एडवोकेट जो है Pardeep Kumar, it's not necessity. Sir, thanks a lot. It was great. What should we do? Knowledge.
मुजाहिद, for future references text me on LinkedIn. मैंने अपना लिंक शेयर कर दिया है kindly. एहसन मेरा लिंक शेयर कर दिया, आप मेरे साथ LinkedIn पे कनेक्टेड भी हैं. somehow एहसन आप काफी ज्यादा रिलेटेड लग रहा है मुझे, मैंने आपसे मुलाकात हुई है, मैं आपको जानता हूँ. But I'm so sorry if that is some conference में कुछ, but you look really familiar to me and I really actually know you somehow. Sir, have you ever been to Karachi? Never. I wish I. लेकिन किसी हम LinkedIn पर ही मिले होंगे I believe. आप भी मॉडल यूएंस वगैरह में थे? Yes, I have been, but they were in Hyderabad, so आप वहाँ भी नहीं आए होंगे I believe. हाँ पता नहीं, लेकिन आपका चेहरा का भी जाना पहचाना. ओके, प्रेसिडेंट फॉलो करते हैं. Usually the questions are similar. Sir, is there a specific international legal framework for mediation? Yes, there is Singapore. अभी बहुत ज्यादा है खंसा, काफी ज्यादा. सिंगापुर कन्वेंशन है mediation का. अल्लाह अकबर, तो भाई नमाज पढ़ो. Okay, sir, it is necessary. क्या देख मुजाहिद भाई. Okay. Thank you everyone for saying for good words. ये LinkedIn का लिंक मैंने शेयर कर दिया, काइंडली उसको देख लें. Which includes CPC. Okay. Replying to as a fresh law as a slide was shared by result which include. Okay. Reacted to with. मुझे गनीम इरफान, आपने लिंक्डइन पे विद लिखा है और मुझे समझ नहीं आ रही. Exactly, litigation gives an arbitrator an extra plus. Appreciated, sir. Thank you, Atif. Well explained, sir. Thank you, Oppo A5. Thank you very much, sir. अब मुक गए questions. So, सर मुल्तान आए आऊंगा, यार ना करें. जायद आप गिटार भी पकड़ा है और आप इनवाइट भी करते हैं, हमें म्यूजिक और आम दोनों पसंद है. Okay, reacted to with. Okay, I'm sorry, I'm not much on Zoom though. Do you guys have any question? आपने कुछ ऐड करना है? Ahsan or if Ahmed is here? Sir, I think we should proceed towards the closing. So, Hansa. Thank you everyone for listening and bearing me. It's great having you people. Best of luck. My link is there. You need anything, just give me a text. Thank you so very much. Have a good day in life. And inshallah law field में जो है और जो वैसे भी field में आमना सामना होता रहेगा. Thank you. Sir, thanks to you as well for your time. You have given a lot of input today, mashallah. So I can say it was a very wholesome session. I personally learned a lot of things from you. So thank you so much for your time, for your input, for your efforts. Thank you so much. It means a lot. Yeah, young mediators forum. Thank you. Law vets and like mediators, good thing. So, sir, we are having a formal closing ceremony here since with our collaborators. If you want to stay or it's up to you. Sure. I would like to see a little bit of it. We have taken a lot of time already. No, it's fine. It's completely fine. जो मुश्किल काम था वो तो हो गया, deliver करना. अब तो सिर्फ देखना पड़ेगा. Yeah, thank you, sir. So, Ahmed, are you there? If we have any representative from Young Mediators Forum. So, all right, last Students Council. Yes, Hassan bhai, I'm here. Yes, we would like to hear from you, Hassan, please. Hassan is the president of Law Students Council. So since they have collaborated with us and they were our voice to reach you guys, to reach to the every corner of Pakistan, like we are having representation from, I think, from all of the institutes of Pakistan. So we would like to hear from you, Hassan, please. Thank you so much, Hassan bhai, for honoring us. And gentlemen, myself Hassan Abdullah, and I am the president of Law Student Council Pakistan. On behalf of Law Student Council, I would like to congratulate Law Wits and Young Mediators Forum, especially Hassan Ali Bhai, on successful conduction of this 3-day workshop on ADR. Secondly, I would like to express my gratitude to the esteemed speakers who shared their insightful knowledge and skills throughout the workshop. Moreover, I would like to congratulate the audience for joining in numbers, and I guess 700
participants registered in this workshop. And I hope the things that the participants have learned here would be beneficial for you in your academic and practical career. May Allah bless and guide us in our pursuit of knowledge. Thank you so much. Thank you so much, Hassan. First and foremostly, I would like to thank Sir Hassan as well. So I was not there, but I really appreciate you. Like, I really want to say that the session was really a great success. You spoke really well. Thank you so much for your time, for your presence, for your knowledge, for your outputs. Everything was amazing today. And with this session, we are just finally concluding our workshop, which was on alternative dispute resolution and international and Pakistan perspective. So with that, as Hassan has already spoke about LSC, I would like LNP if Legal Monarch Pakistan it's a representative of Legal Monarch Pakistan. If you can speak. Do we have any representative from Legal Monarch Pakistan from you? Craftaholic is a venture which is led by Miss Hafsa, and she was the graphic designer of art. So I will like Hafsa if she wants to say something as we are concluding this workshop. Assalamu alaikum, am I audible? Yes, Hafsa, you are audible. Assalamu alaikum, my name is Hafsa Adil and I am owner of Craftaholic. Hope everyone is doing well. First of all, I would like to thank Sir and Khansabi for having me and giving me this opportunity to design all the posters and graphics for this prestigious workshop on ADR. Secondly, all the lectures were very informative and fruitful. Every guest speaker had excellently delivered their lecture and I had learned a lot from them, and thank you for having me. Thank you so much, Hafsa. Your input has been very generous in this workshop. So we are having a representative from Legal Monarchs Pakistan, Riaz Khosa Saab. If you want to add something, please. Riaz Saab from Legal Monarchs Pakistan, if you are there. So I think YMF is also not here because अहमद जो है वो भी कहीं travel कर रहे थे, so he is not able to make in. और उसके अलावा जो है रियाज साहब ने भी join किया था, but I cannot find him now. So there might be some technical difficulties. So I think we should wrap it up, Hansa, this way. So you can take leave now. Sorry, I think I was having internet connection issue. So, but then it covered for this interruption. So did have size pro? Hansa, there's a distortion in your voice. I think that there's internet issues. So Asim, can you please complete the workshop? All right, let me. So regarding the attendance and certificates, we have prepared a separate form that will be a Google form we will be sharing in the group shortly. So we also understand this fact that most of you they were busy in their GAT exam. So we will be publishing all of the recordings on our YouTube channel and giving you a few days time so that you guys can listen to the videos, those who have missed it, and then you can submit the form, Google form. And thereafter, we will be giving the certificates to the eligible participants whoever submitted the form correctly. So this is the procedure. We will be sharing the procedure in your group as well. Thank you so much. Thank you so much to all our esteemed speakers because their input, their contribution, it has been very generous throughout this workshop. Thank you so much. Thank you so much to all of our collaborators, Young Mediators Forum, Law Students Council, Craftaholic, Legal Monarchs Pakistan. That they have been our sound. Without their input, without their efforts, this was nothing. This was not something possible.
So thanks to all the participants for your interest. We hope that we were able to deliver what you guys expected at the time of signing up. So thank you so much, and stay connected with Lovitz, stay connected with our collaborators for future opportunities, inshallah. So we would also like to hear from you on our social medias and as well as our Google form. We will be adding a section there as well for the feedback. Thank you so much, everyone. See you soon, inshallah. Allah Hafiz.